Good morning, sir. Morning, everybody. How do you read me? Loud and clear. Okay. All right. Let's come to three targets. So, three targets. Okay. So we have three targets. WO is 122. 15 knots in RV. Boy X-ray. Target Yankee. Target Zulu. Zero 300 hours. And 03 12 hours. 113 8.2 miles. 108 5.3 miles. 162 10.2 miles. 159 7.4 miles. 201 10.3 miles. And 201 8.1 mile. These are the bearings and ranges of the three targets. Okay, let me know when you're ready to write the question. Sir, ready. Okay. So write down first part of the question. When boy X-ray is abeam, So when boy X-ray is abeam. When boy X-ray is abeam. The next course to steer for navigational purposes. The next course to steer for navigational purposes is 140 degrees true. So please repeat 142. 140 degrees true. The next course to steer is 140 degrees true. If own ship's master does not want any ship, if own ship's master does not want any ship
to pass less than 1 mile off. Does this alteration of course does this alteration of course resolve the situation? Resolve the situation. Does this alteration of course resolve the situation? There's a second part to the question that I will tell you later once you do the question. So start the question, start making the triangles, and you will have to do it at a very fast pace because there are 3 targets now. Try to time yourself. How much time do you take? सर टारगेट जुलू के लिए सेकंड रेंज एंड बेरिंग है जो 8.1 है सर. That's right. 201 8.1. ओके सर. सर टारगेट सेट का सेकंड बेरिंग 201 था ना. That's right. Constant bearing.
सर ये एक्स पे एरोस कैसे मारेंगे सर, जैसे अगर डब्ल्यू ए पे कंसाइड कर जाता है? Nothing. So I just want to know, is W and A coinciding? यस सर, इट इज कोइंसाइडिंग. बस ठीक है. Yes. Just Yes, leave sir. it. Coinciding, sir. Okay. So just leave it like that. No need to put any arrows there because it's a stationary target. So therefore you can just afford to leave it.
Now, the CPA desired is 1 mile. So draw a goal chakkar of 1 mile. All right. Next, the question says, when boy X-ray is a beam? So, question is, when will boy X-ray be a beam? So, what is the beam bearing 90 degree. of X-ray? What will be the beam bearing of boy X-ray? 120 Two, plus 90. 2, 1, Correct. 2. So, my own course is 122 plus minus 90 will be the beam bearing. My own course WO and plus minus 90 is the beam bearing. Agreed? So the beam bearing. Yes, sir, agreed. So beam bearing of X-ray will be 032. Is it okay? Yes, sir. All right. So at Charlie, put a ruler at 032 and draw a dotted line. So this is my 032 line. This is my beam bearing line. That means अगर मैं 122 पे ऐसे हेड कर रहा हूं तो ये लाइन मेरा 90 डिग्री एंगल बना रही है मेरे शिप साइड से. ये कहने का मतलब है. So let this connect at the line of approach of X-ray at a point P. Find time at P. Find time at P. That will be equal to this will be the time at P. हाँ जी. So 3:32. Is that okay with everybody? Yes. सबका 3:32 है. Yes. 33 है. हाँ ठीक है. That's fine. सर 32 सर. 32, 33, 30, 31, whatever is okay. How you show the formula, that is more important, and how what values you put here, that is, जो ये formula ज़्यादा important है. सबसे ज़्यादा तो important formula है.
So as examiners, first thing that I look at is the formula. अगर formula लिखा है तो then I know the person has done this thing of calculation. All right. At 3:32, what will be the position of Yankee and Zulu? So predict position P for Yankee and Zulu. Predict position P for Yankee and Zulu. At their respective rates of approach. That means Yankee अगर 12 मिनट में OA करता है तो 20 मिनट में कितना करेगा? Similarly, Zulu. Okay. The next course to steer is 140 degrees true. So draw WO1 140. On Yankee. Similarly on Zulu. Speed is the same. So distance as WO, cut an arc. Call this as O1. Call this as O1. Join O1A. W1 किसके पैरेलल मारा सर? By the new course of the own share Okay, is sir. Okay. given as 140. Okay. Transfer O1A through P. Forward transfers are all through P. So वो और बाहर से चला जाएगा. Call this as N. Sir, please repeat, sir, this last. कहाँ से? कौन सी जगह से रिपीट करूं? Which point? सर अभी WO1 बना दिया वो यंकी और जुलू का. हाँ, WO1 बना दिया और join O1A for Yankee and transfer it forward through Papa. सर ये एन हम लोगों ने जो एक्सरे की लाइन ऑफ अप्रोच है उसको देना है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है N. ये तो खाली जस्ट टू इंडिकेट कि ये PN लाइन है. ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है रैंडम. कोई पॉइंट नहीं है ये. ओके सर.
Now do the same thing for Zulu. जुलू का 1 नॉटिकल माइल कम से जा रहा है. कम से जा रहा है सबका? ये सर कम है. कम है, तो सर्कल के अंदर से जा रहा है. Is everybody Yes, getting it? अंदर से यार. सबका Yes, अंदर sir. से जा रहा है. ओके, नाउ यू आंसर द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ यू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. नेगेटिव्स आर रिजॉल्व नहीं कर रहा सिचुएशन. Correct. So you'll write down now. No, this alteration of course 140 degrees true does not resolve the situation. Is that okay? As Zulu CPA is less than 1 mile. As CPA of Zulu is less than 1 mile. Is that all right? यस सर. सर हमें सीपीए लेस देन 1 माइल बताया, हमें ये भी बताना कितना है. हाँ, रीजन कितना है ये नहीं, लेस देन 1 माइल बता रहा हूँ. क्योंकि क्यों रिजॉल्व नहीं करता है ये बता रहा हूँ. Next question. Now you write down the second part of the question. Now you write down the second part of the question, जो हमने छोड़ दिया था. So second part of the question is, if not, what alteration of course would be suitable from ROR and navigation point of view? What alteration of course would be suitable from ROR and navigation point of view? सर इसमें अगर हम सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करें पी पे, देन उसे बैकवर्ड ए पे ट्रांसफर कर दें तो आ जाएगा. दोबारा बोलो. सर if we draw tangent from circle, that 1 nautical mile circle to P, Which and then transfer it backwards to A, which we target? get that Which target? target Zulu sir. Correct. जुलू सर, जुलू और So, स्टारकोड में जाएंगे. so basically, Zulu is the bad guy in this question. पूछा नहीं गया, but Zulu is the bad guy. Agreed? Yes sir. That means अगर मैं ज्यादा ऑल्टर करूं स्टारबर्ड को जुलू के लिए, तो यांकी तो और बाहर चला जाएगा. यांकी इज द गुड गाय. Agreed? Yes sir. Okay. So since Zulu is the bad guy, so I draw a tangent for Zulu. All right. So draw a tangent for Zulu. Call this as point N. Transfer Pn backward through which point? A. Sir, A. All right. So transfer it backward through A. Okay. Speed is the same.
So distance as WO1 or WO, same thing. Cut an arc. Call the point as O2. Join WO2. Then new course is WO2. Measure WO2. ये आएगा 158. 160 आ रहा था. ठीक है, that's okay. That is auto course. 159 sir. ठीक है, that's fine. 36 degrees starboard. Now superimpose WO2 onto Yankee. You have to show that उसका CPA बाहर से जाएगा. Superimpose WO2 onto Yankee. Speed is the same. Join O2A. And transfer through P. And show it going बाहर से. That's it. इसको यहीं पे. This finishes off your question. Now, since the question says ROR point of view, so you will have to write, I'm in rule 19. Delta 1, and then you quote the rule. Then you quote the rule. सर रूल कोट करना जरूरी है क्या सर? हाँ, because ROR लिखा हुआ है, so इसलिए it's important. Because जहाँ पे जिस क्वेश्चन में वर्ड ROR आ गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन इज वांटिंग यू टू कोट अ रूल. वो आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन. ओके सर. तो यू हैव टू कोट दैट. बिकॉज बेसिकली व्हाई आर यू ऑल्टरिंग टू स्टारबोर्ड, व्हाई आर यू नॉट ऑल्टरिंग टू पोर्ट. क्वेश्चन ये था. So you could have altered to port also. Why are you not doing that? So वो वाली बात आ रही है. So all right, let me know when to start summarizing the whole question. I'll just summarize the whole thing once again. Sir, is 155 okay, sir, for answer? Yeah, that's okay. That's fine. Perfectly fine. Okay, sir. So shall I summarize the whole question? Yes. Okay. So we are at Charlie in RV and we are heading 1 to 2 like this. I've got 3 targets. I've got a buoy X-ray on my port side, which is coming down like this. I've got a target Yankee, which is crossing me starboard to port, and it's going to pass far ahead of me. And I've got another target Zulu, which is coming in like this. And with this guy, I've got a
collision course. CPA is 0. So quite obviously, this guy is my bad guy. But nevertheless, we don't start altering so that the master waits for the boy to become a beam of us. That's what we normally do. If there's any obstruction on my port side, then we try to clear the boy. So the boy, when he becomes a beam, so he becomes a beam at 332. So we wait for the boy to become a beam. Once the boy is a beam, at that time, Yankee is at Papa. He's ahead of me. Zulu at that point in time is at Papa here. He's come closer to me. Now I start altering course to starboard. So first alteration is 140. But that CPA is not good enough. So therefore, a larger alteration is required. So 158, larger alteration to starboard is required. And now the target is going to pass ahead of me by a CPA of 1 mile. That's what the whole question is all about. And Yankee, in any case, was already ahead of me, was already more than 1 mile off. So in any case, वो और clear हो जाता है. So is the question okay with everybody? Yes, sir. Okay. अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे ट्विस्ट करता हूं? सपोजिंग मैंने क्वेश्चन में लिखा होता when boy x bears 090, when boy x-ray bears 090, तो क्या करता मैं? 32 डिग्री ले लेते हैं। हाँ जी, अपने हेड से 32 डिग्री पोर्ट में आके वहां पे वे लाइन खींचते और जब वो अप्रोच लाइन इसको क्रॉस करती तो वो पॉइंट पे ले लेते। अपने हेड से? व्हाट डू यू मीन बाय अपने हेड? मतलब 090 का बेरिंग पे जब वो आएगा हम ऑलरेडी 122 हेड कर रहे हैं तो हमारे मतलब हमें 32 डिग्री पोर्ट पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वो तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है सर। सर वो 090 बेरिंग ट्रू दिए ना सर, ट्रू दिया तो 090 मारेंगे सीधा सर, बस जहाँ कटता है वो पॉइंट पे हो जाएगा। सीधा मारना है, प्लीज मतलब 32 डिग्री आएगा। नहीं नहीं नहीं, चार्ली से 090 लाइन मार दो। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। समझ में आया? ये बन गया पॉइंट क्यू। Have you understood this? Yes, sir. He says when boy X-ray is bearing 090. So boy X-ray is bearing 090 at Q. Now you find time at Q and then you proceed. Then the rest of the thing you know. Is that okay? Yes, sir. All right. Similarly, the variation can be when boy X-ray bears due east. ये हो जाएगा सेम स्टोरी। ठीक है? Is that okay? When boy X-ray bears 090 बोलेगा तो ऐसा होगा, अगर 090 रिलेटिवली बोलेगा हाँ रिलेटिव नहीं बोलेगा कभी भी, हमेशा ट्रू बेरिंग्स ट्रू ही देंगे इसमें हम ज्यादातर। और अगर सर कुछ भी नहीं दिया होगा तो we will consider all the bearings true. तो then it will be, you can assume it is bearing true. You can cross check and ask them के doubt कि sir ये please clarify, but generally assume it is true and then proceed ahead. ठीक है सर, जिस भी क्वेश्चन में बॉय दिया होगा और कोई करंट नहीं मेंशन होगा तो डब्ल्यू और ए तो हमेशा सुपर इंपोज ही करेंगे ना? हाँ करेक्ट, हाँ राइट। इसमें और भी चीजें थी वो मैंने अब आपसे नहीं पूछी हैं। इसमें
कोर्स एंड स्पीड ओवर ग्राउंड, वो मैंने आपसे नहीं पूछा। रिवर्स एओ। रिवर्स एओ फॉर विच टारगेट? एक्सरे फॉर बॉय। फॉर द स्टेशनरी टारगेट फॉर बॉय। तो वो चीजें मैंने वो सब हटा दिया है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट आई एम रिमूविंग ऑल दैट। तो सर इसमें जैसे सेट एंड ड्रिफ्ट अगर पूछ लिया होगा उन्होंने तो कैसे निकालेंगे हम? AW 0। ओके सर। 0। उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा इसमें दैट मींस WO का कोर्स की ऑल्टर कुछ और देगा फिर वैल्यू, ताकि वो AW की कुछ वैल्यू आए ताकि मैं उसका सेट एंड ड्रिफ्ट निकालूं। ट्रायंगल बनेगा ना फिर? जब ट्रायंगल बनना चाहिए उसमें मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तब मैं कर सकता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? सर इसका फाइनल आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर फाइनल कोर्स मैंने दे दिया ना, 158। 158 ओके थैंक यू। 158 alteration of course 36 degrees to starboard. Okay. All right. Next time sir like DG क्वेश्चन में सर फ्लोटिंग क्वेश्चन कितने मिनट्स में कर लेना चाहिए सर हमको? 25 मिनट। ओके 25 मिनट में हो जाएगा। अगर सिंगल टारगेट है तो यू शुड बी एबल टू फिनिश इट इन 20 मिनट्स, अगर सिंगल टारगेट है, और अगर 2 या 3 टारगेट हैं तो 25 मिनट। जनरली 2 टारगेट आते हैं, जनरली 2 आते हैं, बट 3 भी आए हुए हैं, सो प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। सर 3 टारगेट्स में एक बॉय होता है। 3 टारगेट में एक बॉय होगा। 3 टारगेट में एक बॉय होगा। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जो सेट एंड ड्रिफ्ट या COG वाला क्वेश्चन होगा उसमें हमें स्टेशनरी टारगेट दिया ही होगा सर, दैट इज फॉर श्योर। मतलब समझा नहीं मैं। इनके सर हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड सेट एंड ड्रिफ्ट या फिर COG स्पीड थ्रू वाटर, तो हमें एक स्टेशनरी टारगेट दिया होगा। बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल। Set rate COG SOG I can only find out if you give me one stationary target, then only can I find out. Okay sir. Otherwise I can't find out. So sir, AO is the COG and SOG in this case for X-ray. Correct. Absolutely right. सर एक क्वेश्चन था कि फेज 2 का एग्जाम देने के लिए फेज 1 अटेम्प्ट होना जरूरी है क्या? नहीं, वो दे सकते हैं बिना अटेम्प्ट किए, फेज 1 भी फेज 2 दे सकते हैं। लेकिन वो सी टाइम असेस हो जाना चाहिए। ओके सर। एंड सर ये ओरल्स के लिए कौन से मॉड्यूलर कोर्सेज चाहिए, वो कर लेंगे तो? मॉड्यूलर कोर्सेज आपको चाहिए रैंसको एंड मेडिकेयर। मेडिकेयर ऑनलाइन हो जाएगा सर इसमें? मेडिकेयर ऑनलाइन हो जाएगा। मेडिकेयर ऑनलाइन। रैंसको आगे करना पड़ेगा? रैंसको चल रहा है आजकल, अभी स्टार्ट हो जाएगा। शुड बी स्टार्टिंग इन अनदर मे बी, जैसे ये मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ होता है, सो दे विल रिज्यूम दैट। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट स्टार्ट्स, बट मेडिकेयर इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑनलाइन। सर ये दोनों कोर्स जो है आफ्टर ओरल्स आल्सो वी कैन अटेम्प्ट, और बिफोर ओरल्स वी हैव टू डू दीस कोर्सेज? नहीं, बिना भाई ओरल के लिए तो ये प्री रिक्विजिट है। ओरल के लिए प्री रिक्विजिट है। Okay, so sir, ये files का क्या करना सर? Initially we used to hand over this file to you when we were physical classes. So now what you can do is you can start making your files
कैप्टन नवीन तिवारी के साथ में जरा आजकल में बैठ जाओ एंड उनसे नवीन तिवारी सर से पूछो and he'll give you send you the instructions for phase 2 files and I think वो शुरू में भेज दिया मेल किया था कि नहीं किया था वेलकम किट के साथ. हाँ सर वो चेकलिस्ट है. चेकलिस्ट है. So you start making your phase 2 files and he will do a session with you and keep your files, make it ready with you. ओके सर. सर जुलाई में एग्जाम के चांसेस हैं? जब मतलब अभी तो मतलब कुछ भी नहीं मैं बोल सकता क्योंकि जिस तरीके से how the lockdown lifts off, we really don't know. It is all dependent on the lockdown. तो सर अब तो बुक के लिए we have to go by ourselves with the file. नहीं. If exam happens in July. No, files will move only at this point of time are moving only through the institute. So when we tell you, you will be sending the files to ARI Saket. So Vandana will be your point of contact and Captain Naveen Tiwari will be your point of contact for the files. सर अगर अभी जैसे एग्जाम नहीं होते हम लोग शिफ्ट चले जाते हैं तो सर फिर फाइल्स का कैसे होगा? जब हमने देना होगा तब इंस्टीट्यूट करेगा या? हाँ जब आप when you come back, so basically you make your files. That's the reason why I'm saying you make your files and put it in an envelope. Mark the envelope in your with your name and details, phase 2 course done, so and so ARI mobile number सारा लिख के envelope ready रख के घर पे छोड़ जाना, so that whenever we tell you, so you can have it speed posted to ARI Saket. So sir, we'll be notified timely, right, sir? We'll be notifying you. Okay, thank you. We'll be notifying you, but I want the files to be ready at your end. I want that file to be ready at your end. ये उस वक्त मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर मेरा सी टाइम लेटर नहीं आया, मेरा ये नहीं है. उस वक्त मैं ये नहीं चीज नहीं सुनना चाहता. उस वक्त मुझे फाइल चाहिए. सर फेज 1 शेप से किया था सर और अभी जून में पेपर होने से पर हो नहीं रहे हैं. फाइलें तो सर गई नहीं है, हमारे पास ही है. तो सर फेज 1 की फाइल आपकी अलग बनेगी, वो अलग रेडी रहेगा और फेज 2 की फाइल अलग होगी, रेडी होगी. सर वो शेप के थ्रू जाएगी और ये वाली पंचकुला इधर के थ्रू जाएगी, ARI के थ्रू के इधर ARIC हो जाएगा सर. सारा कुछ अल्टीमेटली कन्वर्ज तो ARI साकेत पे ही हो रहा है. Everything is converging through Saket. The only thing is your phase 1 file will need signatures of Captain Sunil Baba. So उसकी वेटिंग वहां पे होके करके फिर वो मेरे पास भेजेंगे. तो अल्टीमेटली घूम फिर के मेरे पास ही वापस आ रही हैं सारी चीजें. Okay sir, thank you. But for the sake of clarity, you will have to make 2 files. जी सर, थैंक यू. सर कंपनी सी टाइम लेटर का जो कलर प्रिंट आउट चल जाएगा क्या? स्कैन कॉपी कलर प्रिंट आउट. Company सी टाइम लेटर is causing so much of a, क्या बोलूं सर भेज ही नहीं रहे कंपनी वाले. सारे घरों पे बैठे हैं, साइन करके कुरियर नहीं करके राजी कोई. तो बोलो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. पता है कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? कंपनी वाले जो है वो ऑफिस की स्टेशनरी बचा रहे हैं. सर वही सब तैयार करके रखा हुआ है इन्होंने. बस नाम डालते हैं कंप्यूटर पे और भेज देते हैं. पेपर प्रिंट निकाल के भी नहीं राजी सर. तो स्टेशनरी बचा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जब फिजिकल क्लासेस चल रही थी तो मुझे कितने कंपनी वालों के फोन आते थे कि सरीन यू आर द गाय, तो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम करवा रहा है. बच्चों को कहता है 3 ओरिजिनल लेके आओ. So I used to tell everybody get 3. जब भी सी टाइम लेटर लेते हो 3 ओरिजिनल लेना, पर एक से काम नहीं चलेगा. 3 तो चाहिए सर. एक फेज 1, एक फेज 2, एक ओरल. अब 5 बोलिए. तो फिर बाद में मैंने बोला कि 2 एक्स्ट्रा भी ले ले जितने. तो क्योंकि एक फेज 1 के लिए चाहिए होती है, एक फेज 2 के लिए चाहिए होती है और एक ASM के लिए भी चाहिए. तो ये 3 तो देनी है ओरिजिनल में.
उसके बावजूद एक दो स्पेयर भी होनी चाहिए भैया, फाइल में रहती है तो स्पेयर भी रखो ताकि कोई गुम गई या कुछ हो जाए तो सारे के सारे कंपनी वाले मेरे को जब पार्टी होती थी तो यही कहते थे कि यू आर द कल्प्रिट। तो अब सब वो फायदा उठा रहे हैं। And sir, can you confirm one more thing? I do have Medicare, so do I have to do refresher of MFA, or it's not required? Not required. Thank you. Thank you. If you have a Medicare which is a higher grade certificate, then you don't need that. सर अगर फेज सर 1 के हायर किसी ग्रेड के एग्जाम लिए में तो बंदा एब्सेंट है एएसएफ के साथ वो एफटीएसएफ भी मांगते हैं, नहीं लाइक वो फॉर अलग रिन्यूअल ऑफ नहीं वो अलग चीज है। डोंट मिक्स दैट विद दिस। So that is a requirement under STCW. Medicare is a requirement under the MLC. सर मैंने डीजी को ईमेल किया था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। Regarding? सर एग्जाम के मैंने बताया था ना सर कि मुझे जनवरी 2022 तक मेरा कट ऑफ है ओरल क्लियर करने के लिए। Oh shit. तो वो तो कोई जवाब देगा ही नहीं अभी। जब भी पहला मौका मिले you have to appear and you have to clear. जब भी पहला मौका मिलता है so you can't, वो कोई जवाब भी नहीं दे सकता अभी तो। जैसे ही खुलेगा जब हो जाए the first thing you should do is give the exams. सर फेज 1 का अगर एक एग्जाम में एब्सेंट हुआ हो तो बंदा तो ओरल दे सकते हैं सर आफ्टर अपीयरिंग ऑफ फेज 2 एग्जाम्स। समझा नहीं मैं, I have not understood. सर फेज 1 का अगर एक एग्जाम में बंदा एब्सेंट हो गया हो, बाकी दे दिए रिटर्न्स, एंड फेज 2 का अगर एग्जाम अभी दे देंगे उसके बाद ओरल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, या बिकॉज ऑफ वन बीइंग एब्सेंट नहीं होता? नहीं, you have to appear for all the papers once to have eligibility for orals. ओके ठीक है। सो प्लीज कॉन्टैक्ट कैप्टन नवीन तिवारी के साथ आपकी जब भी क्लास होती है उनसे बात करके फाइल वर्क का काम शुरू करवा देना प्लीज। ठीक है, ऑलराइट। And tomorrow I will start with some remaining topics of stability. I am done with the plotting. We are through with plotting now. So you can start with your past papers questions of plotting, जितने भी हैं. Start attacking that now. So it's a go ahead from my side. ठीक है, is that okay? So दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, पैरामेट्रिक रोलिंग एंड stresses, torsional stress and all that. वो सब, so I'll do that tomorrow. All right, see you then. Bye.